between there. Okay, okay, and then I will put these this B layer on top of this A layer. Okay, so that's why this type of stacking is called your AB stacking. Okay, AB layer, one there is A layer top of this B layer, and again there is A layer. Okay, so if you understand this structure properly, let me show some images from the internet. Okay, so Satish, please allow me the screen sharing. Just give me 1 minute. Satish, can you hear me? Just give me 1 minute. Sir, now you can. So if you see properly, हाँ हो गया? Okay. सर अभी स्टार्ट हुआ है लेक्चर? हाँ बस स्टार्ट हुआ है. So student, can you see this hexagonal lattice? Yes, sir. Okay, so in this lattice you can see we have a layer. Okay, on the top of this A layer we have three red atoms, B layer, and then we have again A layer. Okay, now you can see these atoms are touching each other. Okay, A layer. Okay, similarly this B layer atom also touching to A layer's atom. Okay, so so now we have to calculate the packing fraction for this structure. Okay, so let me come back again. Okay, on my this thing, stop sharing. Okay, so now if you see this thing, okay, so I have now a hexagonal structure. Okay, okay, this is my layer. So 6 atoms, these atoms are touching to each other. Okay, here I'm showing this is a closed pack structure, I'm showing with gaps. Okay, and then we have here again. Okay, screen में कुछ issue तो बताना. Okay, so this is my, so these atoms are touching to each other here. So this is my hexagonal structure. Okay, okay, and here middle we have atoms, and here we have, if we divide this base. Okay, if we divide this base, we can divide this base in 6 equilateral triangles. Okay, now we have 3 B layer here. Okay, somewhere at half distance we have B layer here. Okay, so this is my B layer. Okay, so you can see alternate triangles. So this is my triangle. Okay, the center of this triangle I have this atom, another alternate triangle. Here I have another atoms. Okay, and in this atom we have this atoms. Okay, and now this center atom. Okay, center atom, as I show you the image, center atom is exactly here in this position. Okay, this atom is here in this here, and these atoms are touching to each other.
Okay, so now I want to calculate what is the atomic packing fraction. Okay, so we know the formula for packing fraction. क्या formula है atomic fraction का? Okay, if I want to write atomic packing fraction, क्या formula है इसका? Sir, n by n into 4 pi by 3 r pi r cube upon primitive cell का volume. So n effective जितना है n कितने atoms है इसके अंदर into 4/3. Okay, or we can add volume of atoms inside volume of atom. Okay, divided by volume of unit cell. Volume of unit cell. Okay, now we have to first calculate how many atoms are in this unit cell. Okay, so this corner atom, we have 6 atoms. Okay, so this each atom will contribute only 1/6. Okay, so this layer will give me 6 atoms and each is contributing 1/6. Okay, तो कितना हो जाएगा? And this atom, okay, this face atom, this will contribute only half. So in this layer I have total number of n is 3/2. Okay, 3/2 here, 3 atoms, these are completely inside the unit cell. Okay, so 3 become this much, and again 3/2 here, 6, each atom will contribute 1/6. Okay, and this face atom, this will contribute half, so I have 3/2. Okay, so I have total 6 atom inside this unit cell. Okay, is this clear? ये चीज क्लियर है? 6 आइटम है. ओके, हाँ बोलिए. पहला 3/2 कौन सा लिया जरा बताओगे? अभी ये 6 आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6. Each atom is shared by 6 another unit cells. Okay, so only 1/6 part is coming in this unit cell. Okay, so this total है 1 2 3 4 5 6, इनका 1/6 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. Okay, 1, और जो फेस एटम है इसका ओनली हाफ आ रहा है. ओके, सो यू कैन ये इनसाइड जो 3 एटम है उनका भी सर? ये हाँ, ये 3 तो पूरा अंदर है ना, 3 तो पूरा अंदर है. सर ये जो हाँ. नहीं सर, ये जो इनसाइड 3 है, मतलब कि बीचों बीच जो है, हाँ, ये कहते हैं दोनों लेयर के बीच में जो 3 एटम है. हाँ हाँ, ये इनका, ये ये कंप्लीट तो सर हाफ नहीं, ये कंप्लीट इनसाइड है. अभी जो मैंने इमेज दिखाया था आपको, कंप्लीटली इनसाइड है यूनिट सेल के. ओके, सो ये जो 12 एटम है वो टोटल मिलाकर 2 एटम 2 देंगे. ये फेस वाला एक देगा और 3 अंदर. सो देयर टोटल 6 एटम्स. ओके, ध्रुवी क्लियर है? Okay, now Yes, sir. now we have to calculate the volume of unit cell. Now these atoms are touching to each other. Okay, so this R, and this is my lattice constant. Okay, so we have the relation between these constants. So I can write 2R equal to A. So R is A/2. Okay, and the number of atoms is already we calculated 6. So I can calculate these things. Okay, now volume of the unit cell. So volume of the unit cell, say this is the lattice parameters A, and this is also A, and this total is C. Okay, so the volume of this, in order to calculate the volume of this unit cell, I need to calculate the area of this base. Okay, so area of base. Okay, so volume of unit cell. Okay, volume of unit cell is equal to area into height. Okay, so area, if I want to calculate area, so area will be, there are 6 triangles. Okay, 6 equivalent triangles. So it will be half. Okay, so 6 into 6 into half. Base is A. Okay, this atoms are touching. The base is A. Okay, and I need to calculate this height. Okay, this angle is 60. Okay, तो कितना आएगा? √3. सर √3/2 है. √3/2. Okay, very good. Okay, so this is my area. So if I solve, I can write my area A equals to, this becomes 3. Okay, so 3/2 √3 and A square. This is my area. Okay, now I need to calculate the C. Now I can only write my volume atom in terms of A. So I need to bring this C in terms of A. Okay, so how to bring this C in terms of A?
So you can see this atom. Okay, this atom we have this triangle. Okay, you have this triangle. Okay, and this top atom. Okay, so this layer is at c/2 distance. Okay, so this layer is middle. Okay, so this layer, this height, this layer, this is on c/2 distance. Okay, from the top. Okay, so this is c/2, this is c/2. Now this atom is here. Okay, and this atom is also touching this atom also. Just now I have shown you the image. Let me show it again. Okay, so just see. Okay, this top atom, blue atom, is in the middle of this red triangle. Okay, and this side red atoms, they are also touching this middle atom also. Okay, so the distance between this red atom and this top middle blue atom is how much? A. Okay, so if I see, here is my point. Okay, this point, and this point is a distance from these atoms. Okay, because this atom is here, and this atom is touching these three atoms. Okay, so what I can do, if I want to calculate this distance is c/2. हाँ बोलिए. स्क्रीन जरा ऑफ करो, मतलब बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है. Okay. So now this, okay, this is your atom, and this distance is c/2. Okay, if you know this distance, if you can calculate this distance already you know, because when this atom is here, they are touching here. So this distance already you know, distance is a. So what I can do, okay, I have, okay, this triangle. Okay, so this distance, okay, between the atom is already a. This height, okay, this height is already c/2. Okay, now I need to calculate this distance. Say this distance is oa. Okay, this is my center o. Say this is a, this is b, and this is c. I need to calculate this distance. Okay, so this is center. Okay, if I know this distance, I know already this distance a. Okay, this height already I know. If I can calculate this distance, I can find the relation between C and A. So this distance OA, ये कितना distance हो जाएगा? OA कितना हो जाएगा? 3/2. So OA is, okay, OA is this distance is A/2. Okay, so I can write sec 30 और sec 60. Sorry, sec 30. Sec 30 कितना हो जाएगा मेरा? Sec 30 will be sec 30 or sec 30 will be your this OA upon A/2. Okay, so this will be A/2 and root, okay, root 3/2. So this will give me, ये आ रहा है क्या? ये कितना आएगा आपका? Just let me calculate you want height. Okay, so height should come, कितना आ रहा है भाई बताओ? ये OA कितना आ रहा है? सर हाइट तो अभी हमने c/2 बोले थे ना. OA by A/√3 आना चाहिए. A/√3. This distance should come height तो आपका ये c/2 है. ये सेंटर से यहाँ के डिस्टेंस कितने आएगा? सेंटर से लेके ये डिस्टेंस कितना आएगा? So this is your A/2. Okay, now you want this distance कितना आना चाहिए? So if I calculate, सर ये और एक बार सर बताएंगे? कौन सा वाला? सर ये डिस्टेंस कौन सा वाला? सर ये जो आपने जो छोटा वाला जो A/2 का, ये वाला ना सर a² + c²/4. हाँ, ये डिस्टेंस कितना है वही तो पूछ रहा हूँ. भी ये 60 एंगल है, 30 में 30 निकालो. तुमको ये निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, कैसे निकालोगे? ये डिस्टेंस आपका A/2 हो जाएगा. ये आपस में टचेस है, तो ये डिस्टेंस A/2 हो जाएगा. तो दिस डिस्टेंस इज A/2. ओके, अब ये डिस्टेंस कितना होगा? निकाल के बताओ ना कितना आएगा. ab² = a² + c²/4 ना, क्योंकि वो बीच में से हाइट c/2 हो जाएगी. हाइट c/2 कैसे हो जाएगी? हाइट थोड़ी c/2 होगी. c ही होगी.
हाँ, हाइट 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 थोड़ी c/2 होगी, इसका मिडिल का हाइट ये तो निकालना हमको डिस्टेंस, ये c/2 नहीं है, ये तो पता करना है। तो एंगल दे रखा है ना आपको, कि आपको एंगल दे रखा है 60, ये 30। ओके, तो sec 30 लगा दो, sec 30। ओके, सो OA अपॉन बेस a/2 ये आना चाहिए। हाँ हाँ, सो OA कितना आ जाएगा? ओके, a/2 इंटू sec 30 कितना होता है वही पूछ रहा हूँ। sec 30 कितना आता है? 2/√3 आता है ना, ये उल्टा लगा सर देता मैंने, ठीक है, तो कट गया, तो a/√3 तो आएगा, ठीक है, a/√3 आना चाहिए। So this is, now you know this distance OA is a/√3, this distance A c/2, you now you can find the relation. Okay, so I am erasing this one. Okay, so I can write now, okay, a square equal to c/2 का square plus a/√3 का square. Okay, this will give me a square c square by 4 plus a square upon 3, and this will give me the relation now what I want between a and c. So a square minus a square upon 3 c square by 4. So this will give me 2a square by 3 c square by 4, and c will be 3 minus 2. Okay, c square by 4. Okay, and this will give me a square 4 into root 2 by 3. c square equal to 8/3 a square, and c will be 8/3 a. Okay, and this is the relation, famous relation, you remember. Okay, you should remember this one actually. So c is your under root 8/3 a. Now you know everything. Okay, now you want to calculate your fraction. Okay, atomic fraction. So atomic packing fraction. Okay, this will come 6 atoms into 4/3 pi r cube. R is a/2 cube. Okay, now volume of unit cell. So unit cell का area हमको पता ही है. Area is what? This one just now we calculated. So area is 3. Okay, 3/2 root 3 a square, and height is your c, which is equal to under root 8/3a. Now just solve this one and tell me what is the answer. And if you solve this one, okay, this should give you atomic packing fraction should give you equal to pi by 3 root 2, and this is again equal to 74%. Okay, equivalent to FCC, atomic packing fraction of FCC. आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके, नाउ इसमें इस डेरिवेशन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? ओके, नाउ सर मेरे वो हाइट निकलना सर, तो वो इमेज से क्लियर नहीं। हाँ, वो एक्चुअली थोड़ा 3D है, तुमको खुद को थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा, ठीक है ना? ओके Hello, sir. Yes, sir, you pause. Sir, your सर। video is paused or सर वीडियो रुक गई। हाँ सर।
कहाँ पे कट गया था ये बीच में? सर वो जो एक मिनट। हाँ सुल्तान, ये तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, मैं ये बता रहा था, ये आपको ये बस ये इतना समझना है कि ये जो एटम है टॉप वाले का, इसको टच कर रहा है। ओके, टच कर रहा है तो हमारे पास ये डिस्टेंस तो ए है। ओके, और ये हाइट पर है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये हाइट, हमको ये हाइट पता चल जाएगा यहाँ से, ये हाइट। तो हमको बस बेस चाहिए, तो बेस हमने निकाल लिया यहाँ से, इस ट्राइंगल से। जो हमारा बीच का बी लेयर है उसका हमने ये बेस निकाल लिया। ओके, और ये जो हमारे पास तिरछा डिस्टेंस है एटम से टच कर रहा है वो पता है, और ये हाइट हमको पता ही है यहाँ से, इसका हाइट कितना है c/2। हाइट पता है, ये पता है, हमने इससे हमने रिलेशन निकाल लिया। एक बार तुम ट्राई करो। ओके, नहीं तो फिर पूछना मेरे से। ओके so okay, I'm erasing this one. So the atomic packing fraction for this structure is 74%. Okay, it's the same like your FCC. Now before I start this X-ray diffraction, okay, let me give you the values of primitive lattice vectors. Okay, primitive unit cell, okay, or primitive lattice vector. Okay, इसके बारे में मैं बात करूंगा व्हेन वी विल डिस्कस आवर रेसिप्रोकल लैटिस। ओके, तो ये अभी आपका होमवर्क है कि आपको ये सारे प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर पे एक 2 पेज का मुझे आपको असाइनमेंट देना है। सो आई एम राइटिंग द प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस। ओके, तो सिंपल क्यूबिक लैटिस में ऑलरेडी वी हैव दिस प्रिमिटिव सेल। ओके, so and the lattice parameter vector for simple cubic, we all know this is a x cap, a2 a y cap, and a3 this is your a z cap. These are primitive lattice vector for simple cubic. Okay, similarly if I want to write the simple cubic vector for BCC, when I was discussing this primitive lattice vector, I told you that primitive lattice vectors are not unique. You can give more than one set of primitive lattice vectors. The only thing is the volume is smallest. Okay, volume will be, the volume does not depend on the choice of primitive lattice vector. Okay, this will be the smallest volume unit cell, and the volume of all, and the atom, it will contain only one. Okay, because the primitive unit cell, so it will contain only one atom. So for BCC I can write 2 type of choices. Okay, I can write A1, which is generally used. It is half A x cap y cap minus z cap. This is a more symmetric one. For A2 I can write A x cap minus y cap plus z cap, and A3 I can write A minus x cap plus y cap and z cap. Okay, so this is the one set of primitive lattice vector for your, so here make it this plus, this minus y3. Okay, and I can also choose A1 as for BCC. Again for BCC I can choose A1 is equal to AX cap. Okay, A2 A2 पहले FCC होगा फिर तो सर पहले ये BCC दोनों जगह होगा। हाँ, दोनों BCC का बता रहा हूँ ना। ओके सर, दोनों BCC के हैं। ओके, ये ज्यादा यूज होता है, सिमेट्रिक वन है। ओके, पर ये भी आप यूज कर सकते हो। सर 2 कॉम्बिनेशन है। हाँ, 2 कॉम्बिनेशन कोई भी यूज कर सकते हैं। A/2 ओके, x cap और y cap and z cap. Similarly for FCC I can write सर ये समझ में नहीं आया कैसे आया। यही तो आपका होमवर्क है।
ठीक है, मैं लिख रहा हूँ और मुझे इसका इस पे एक असाइनमेंट भेजना है आपको कि कैसे लैटिस वेक्टर असाइनमेंट में पूरी भेजना है या इसको डिराइव करके भेजना है? डिराइव करके भेजना है आपको, पूरा बना के डायग्राम बना के कि लैटिस, पहले तो बताना कि लैटिस प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर क्या होते हैं और इनको चूज करते समय क्या क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, और उसका पूरा ये तीनों सर सिस्टम के अभी लिए। जो कंडीशंस आपने दो बताए कि वॉल्यूम स्मॉलेस्ट और हाँ, दूसरी 1 एटम, वही लिखनी है कंडीशंस। वही कंडीशन थोड़ी होगी, उसके अलावा भी आपका दोनों जो लेटेस्ट पैरामीटर, जो आपके दोनों लेटेस्ट पैरामीटर्स हैं वो एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए। ओके, मतलब एक को दूसरे की फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। जैसे A1 को हाँ मैं NA1 प्लस MA2 नहीं ले सकता हूँ, सिमिलरली जो तीसरा है वो उनके प्लेन में नहीं होना चाहिए। तो वही तो आपका होमवर्क है, पूरा देखो कि प्रिमिटिव लेटेस्ट वेक्टर ओके क्या होते सर। हैं और मुझे पूरा एक होमवर्क भेजो, ठीक है। Now for FCC you can write A1, okay, half A x cap plus y cap, A2 is equal to half A y cap plus z cap, okay, A3, ये वेक्टर कैसे आए ये मुझे आपको बताना है। ये प्रिमिटिव लेटेस्ट वेक्टर कैसे लिख रहा हूं मैं, z x cap, okay, and you can find out the volume also, okay, वॉल्यूम आपको पता ही कैसे निकालते हैं, A1 dot A2 cross A3. So for FCC, suppose FCC आप कैलकुलेट करोगे, this will come your AQ by 3, AQ by 4 सॉरी। तो जो आपने पहले निकाला था कन्वेंशनल यूनिट सेल के लिए यूनिट सेल के लिए A क्यूब, उसका 1/4 आएगा। ऐसे ही BCC में शायद आपका AQ by 2 आता है। इफ यू मल्टीप्लाई दिस वन, दिस विल कम AQ by 2। ऐसे ही आप हाँ बोलिए, A3 क्यूब नहीं है ना, A क्यूब बाय 4 ही है ना, वो आपने अभी दिखाया। AQ by 3, AQ by 4, AQ by 4, ओके। यूनिट सेल आपका क्या होता है, AQ होता है ना कन्वेंशनल। And you can also write your for hexagonal also, okay, for SCP hexagonal lattice. So this will be A1 will be equal to root 3 by 2 A x cap, okay, plus A by 2 y cap, okay. So A2 will be minus root 3 by 2A x cap plus A by 2 y cap, okay, and your A3 will be CZ cap. So in SCP also we have 2 sets, okay. This was the one set, okay, and then we have one, हाँ हाँ बोलिए। HCP हाँ, SCP के लिए लैटिस वेक्टर से है, पैरामीटर लैटिस वेक्टर A1 A2 A3। हाँ, क्वेश्चन क्या आपका? सर मैं पूछ रही थी HCP क्या है इन बातों से? हेक्सागोनल, अभी जो किया ना हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ओके, हेक्सागोनल वाला। सो इसको इरेज कर दूं क्या? यस सर। सो दिस इज योर SCP। सो SCP में भी 2 सेट है। We have SCP one more set of lattice parameter vectors, okay. We have A1 root 3 by 2 A x cap, okay, plus A by 2 y cap, okay, and then you have A2 equal to A y cap, okay, and A3 equal to CZ cap. So these are lattice parameter vectors, okay. Now हमारे पास में मेनली 3 क्लासेस और बाकी हैं, ओके, 3 या 4। 3 क्लास में हमको क्या करना है, एक तो एक्स्ट्रा डिफ्रैक्शन करना है, ओके। तो ये वॉइस आपकी आवाज नहीं आ कहाँ रही। गया? फिर आवाज बंद हो गई है। अभी आ रही है? यस सर।
Yes, sir. So I was talking that now we have three more things. One is we have to discuss this X-ray diffraction, okay, and then we will discuss this your reciprocal lattice, and we'll do some previous year problems on this, depending on this on based on this X-ray diffraction and reciprocal lattice. हाँ, कोई क्वेश्चन है वरुण, कुछ पूछ रहे हो तुम? नो सर, मैं थोड़ा सा हटने का बोल रहा हूँ। So let me at least today start what is X-ray diffraction. Okay, so we have X-ray diffraction. Okay, so when हाँ बोलिए. तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें विंग सेल करके एक टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसको कैसे करना है खुद से ही? वो भी अच्छा, WS विग्नर सेटिस सेल ना? यस सर। हाँ, तो विग्नर सेटिस सेल का क्या होता है? विग्नर सेटिस सेल ओके, उसका जो वॉल्यूम होता है वो प्रिमिटिव सेल के बराबर ही होता है. ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ वन डायमेंशनल लैटिस, okay, now what I have to do, I have to connect this point with the nearest neighbors. Okay, so for in 1D these are the nearest neighbors. Okay, now I want to calculate, now divide this distance in half. Okay, so this distance here we have, suppose one more atom here, one more atom here. This is suppose 2D crystal now. Okay, so if this is 1D, okay, you just divide this line by half. Okay, and connect. So this is your Wigner unit cell. Okay, Wigner Satis unit cell. Wigner Satis unit cell. Okay, and the volume is the cell volume is equal to primitive unit cell. Okay, volume equal to primitive unit cell. Primitive unit cell. Okay, similarly this also contain only one lattice point, like your primitive cell contain one unit cell, this also contain only one cell. Okay, if there are more than atoms, okay, suppose this is your atom, here I have one atom, here I have one atom, here I have one atom. Okay, so just you need to connect this your point with this nearest neighbor. Okay, nearest neighbor, divide this distance by half. Okay, and connect these all points, connect these all points. So this will be your Wigner Satis cell. Now why this cell is important? When you take Fourier transform of this lattice, okay, so when you go to the reciprocal lattice and you draw same like what I've drawn here, then this unit cell will be equal to your Brillouin zone. Okay, so if somebody asks you what do you mean by this, I wanted to discuss in reciprocal lattice. Okay, that's why I kept here. Okay, so in reciprocal lattice, okay, the Wigner Satis cell, okay, Wigner Satis, okay, Wigner Satis cell, okay, of reciprocal lattice, okay, is called your Brillouin zone, Brillouin zone. This is the definition of Brillouin zone. So I will discuss when I will discuss again this reciprocal lattice. Okay, इसकी लेंथ दोनों तरफ सेम ही रहेगी पाई बाई ये भी सेम ही रहेगी ना, तभी तो ये इसकी डेफिनेशन ये है कि ये इस पॉइंट के क्लोजेस्ट होना चाहिए. ये जो इसकी जो साइड्स है, ओके, दिस यूनिट सेल शुड बी क्लोजेस्ट ऑफ दिस पॉइंट. और क्लोजेस्ट कब होगी? जब ये हाफ हाफ हो, क्योंकि इसकी क्लोजेस्ट होगी तो इसके भी क्लोजेस्ट होनी चाहिए. अगर ये यहाँ ज्यादा पास हो गई तो यहाँ से दूर हो जाएगी. ओके, so now this is unit cell. अगर इसको आप चला दोगे, okay, so you can again create crystal. So this should be closest to this lattice point. Then only it is your Wigner lattice cell. Okay, in 1D this is possible only when this is exactly half distance. I hope I'm clear. Yes sir. Yes sir. So now I was discussing this X-ray diffraction. Okay, so in X-ray diffraction, what happens? You have
lattice, okay, which is aggregate of planes. Okay, so I am deriving this Bragg conditions. Bragg condition. Okay, so I have a planes of atom because crystal is made of aggregate of planes. So I am representing this for planes. Okay, so we have planes. Okay, so now what will happen when suppose your X-rays are incidencing on this atom? Okay, this will get diffracted. Okay, suppose this is not symmetrically made. Okay, I'm getting this one more X-ray here, and these diffracted lines, okay, will do constructive interference. Constructive interference. Okay, so X-ray is what? X-ray is basically a non-destructive. X-ray is what? A non-destructive fingerprint technique. Fingerprint technique of crystalline material. Okay, so if you shine X-rays on any crystalline material, okay, you will get a unique diffraction pattern. That means you can, using this X-ray diffraction technique, you can identify the phase present in your material. Okay, phase present, and you can also calculate crystal structure. Okay, so using X-ray technique, you can identify phase कि इसके अंदर कॉपर है, गोल्ड है, या कोई दूसरा मटेरियल है, कौन सी फेज प्रेजेंट है, because it's like a fingerprint, okay, of material. So you can identify what is the phase present, okay, और जो फेज है वो किस फॉर्म में, किस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है, उसकी इंफॉर्मेशन you can get your X-ray diffraction technique. Okay, so when you shine this X-ray diffraction technique, these X-rays got diffracted from the lattice planes. Okay, now diffraction और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है? Anyone can tell me what is the difference between this diffraction and reflection? तो रिफ्लेक्शन में जिस पाथ से आता है उसी पाथ से वापस रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है. तो अभी इसमें क्या हो रहा है? सर डिफ्रैक्शन मींस स्कैटरिंग होना ना. डिफ्रैक्शन मींस दो वेव्स का मिल जाना होता है और रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता सर. ओके, रिफ्लेक्शन में रेस सिंगली निकल जाती है. सो इसमें मेन डिफरेंस क्या है? जैसे ध्रुवी ने बोला, इस काइंड ऑफ स्कैटरिंग. ओके, डिफ्रैक्शन इज अ स्कैटरिंग और एंड it is not depend only surface. Reflection is generally surface phenomena. Okay, your light will come and it will reflect on the top of the surface. Okay, here the inner atoms, your X-ray is going inside. Okay, and from inner atoms it's coming back. Okay, so that is the difference, mainly difference between diffraction and reflection. Reflection is surface phenomena, because while this is scattering, it is not a surface phenomena. This X-ray can penetrate deep inside the crystals. Okay, more than your reflection. Okay, so हाँ, यहाँ हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसके लिए मिल रहा है कि सब एक फेज में है. नहीं, अभी देखेंगे ना. So what is the condition for this constructive interference? Okay, so for that there should be no path difference. Okay, path difference should be same. So if I put a perpendicular here, okay, suppose this interplanar distance is d. This interplanar distance is d. Okay, now if I put a perpendicular here, okay, suppose these rays are falling at angle theta. Okay, this angle is theta. Okay, now if I put this perpendicular here, now the path is same. Now the path difference is this one. This is the path difference. Okay, so the path difference should be equal to n lambda if this rays has to constructively interfere. Okay, so path difference,
delta, okay, equal to path difference should be equal to n lambda. Okay, now here this angle is theta. Okay, so this angle will be also theta. This angle is theta. Okay, कैसे भी दो परपेंडिकुलर लाइन में जो एंगल होता है, दो लाइन में जो एंगल होता है वो एंगल उनकी परपेंडिकुलर लाइंस में भी होता है. ओके, सपोज दिस इज माय लाइन, सो दिस इज माय एंगल थीटा. 90 माइनस थीटा. ओके, सो इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है, तो जो जो एंगल इन दो लाइंस में है वो लाइन इसमें इन दोनों में भी होगा. ओके, so this is also your theta, this is also theta. Okay, now the path difference is 2d sin theta. ये समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूं मैं? Yes, sir. Path difference 2d sin theta. So this is equal to n lambda. So this is your extra diffraction condition. Okay, this is your extra diffraction condition. This is also called Bragg's law. Bragg's law. Okay, now in order to extra diffraction to take place, okay, here n is what? N is integer. Okay, this is 1 2 3 4 is the value of n. Okay, now for extra diffraction, for first order diffraction, I need n equal to 1. Okay, so for first order diffraction, for first order diffraction, n equals to 1. Okay, so if I put n equals to 1 here, okay, this will give me what? This will give me 2d sin theta equal to lambda, and lambda upon 2d will be equal to sin theta. Okay, now sin theta value, maximum value is 1. Okay, that means my lambda by 2d can be greater than equal to 1. Okay, so that means if extra diffraction has to take place, my lambda should be less than equal to 2d. Okay, so जितना आपका क्रिस्टल प्लेन्स हैं उसे उनसे मेरा वेवलेंथ या तो इक्वलेंट होना चाहिए या कम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल द क्रिस्टल प्लेन इज 3 एंगस्ट्रॉम. ओके, that means my lambda should be less than equal to 6 angstrom. So whenever your wavelength is order of your lattice inter atomic spacing, okay, inter atomic spacing बोल दो या interplanar spacing बोल दो, दोनों सेम ही ऑर्डर की होती हैं. Okay, then in that condition your crystal will deflect X-rays. Okay, and the extra diffraction extra diffraction will take place depending on the angle and this plane. Okay, and for each material this extra diffraction is a fingerprint. Okay, this is the one thing. This point is clear? Yes, sir. ये point clear है ना? Extra diffraction क्या होगा? So n equal to 1 में first order, n equal to 2 में second order. Okay, this is your extra diffraction. So आपकी जो wavelength है वो interplanar distance के order की होनी चाहिए in order to extra diffraction to take place. So let me solve one problem based on this one. यदि सर नहीं हुई तो क्या होगा? तो एक्स्ट्रा डिफ्रेक्शन नहीं होगा. अभी अगर आप एक्सरे पर अगर यूवी रेज डालेंगे तो थोड़ी आपका 500 यूवी 500 एंगस्ट्रॉम होता है, थोड़ी आपका एक्स्ट्रा डिफ्रेक्शन होगा. ओके सर. Okay, so that's why when we in experiment when we take x-ray is generally 0.2 to 0.3 angstrom. इसी वेवलेंथ की सॉरी 0 to 2 to 3 angstrom, 2 to 3 angstrom लेंथ की हम लोग लेते हैं. ओके, जनरली व्हेन वी यूज इन लैबोरेटरी वी यूज 1.5 angstrom. तो इसके बीच की वेवलेंथ ही लेते हैं एक्स डिफ्रेक्शन के लिए, क्योंकि आपका लैटिस स्पेसिंग जो होता है वो इसी ऑर्डर में होता है, 2 angstrom 3 angstrom इसी ऑर्डर का होता है. तो आपका जो वेवलेंथ भी होता है वो ये भी इसी को लेते हैं. ओके, सिमिलरली यू आर यूजिंग एक्सरेज. ओके, you can use electron also, isn't it? Electron यूज कर सकते हैं क्या? Can you use electron? वेवलेंथ कम होगा तो चलेगा. You know the electron wavelength, okay, is given by what? It's a de Broglie wavelength, h upon p, and h you can write 2 me.
and because the electron is a charged particle, okay, so you can accelerate this electron by voltage. Okay, so you can write 2m ev. Okay, that means you can control the wavelength of X-rays, electron wavelength, okay, by voltage. So if you put V equal to around 100 kilovolts, okay, so you can get the wavelength in angstrom regions. So even you can go to up to picofarad femto wavelength, okay, 10 to the power minus 15, 10 to the power 12 picometer, femtometer. So जो X-ray है उससे भी कम wavelength पे जा सकते हो. You can go lesser wavelength than your X-rays. Okay, so that's why you use transmission electron microscope. Transmission electron microscope में यही concept use होता है. Okay, you can go at lesser wavelength. Okay, once you can go lesser wavelength, you can get more resolution. Okay, you can get high magnification. किसी भी light क्या होता है, light का जो magnification होता है वो wavelength के कारण limited होता है. Okay, क्योंकि जो light है उसकी wavelength fix है. Okay, एक limit से है. So you cannot see the objects which are smaller than wavelength of light. Okay, so in order to see the objects which have a smaller than light wavelength, you use electron waves. Okay, using this transmission electron microscope. Same in this transmission electron microscope, you can also create diffraction pattern also. Okay, so all these things not in syllabus, we cannot go in detail here. So just you can use electron also for this diffraction, electron diffraction. Okay, same like X-rays. Okay, so I was discussing one problem. Okay, we have a question. Okay, the narrow beam of X-rays. Okay, the narrow beam of X-rays with wavelength 1.5 angstrom. Okay, you have been given the lambda of 1.5 angstrom is reflected from an ionic crystal with a FCC lattice structure. The density is 3.32 gram per centimeter cube. Okay, density is given. The molecular weight is given 108 AMU. Okay, and so you're asking number one, what is the lattice constant? A. I think this we have done last class also. Okay, lattice constant की value क्या है? Once you know the lattice constant, the second question is asking X-ray of, हाँ बोलिए, X-ray of wavelength lambda equal to A. तो इस क्वेश्चन में आपने जो A निकाला उसी ऑर्डर की X-rays, okay, are reflected from one plane, one plane, okay, of a simple cubic lattice. Okay, of a simple cubic lattice. So ये पूछ रहा है, if the lattice constant is A, if the lattice constant is A, okay, then corresponding Bragg angle. Okay, what is the Bragg angle? Bragg's angle पूछ रहा है. So क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं एक बार. आपको वेवलेंथ दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है. So you can calculate density using formula n effective, okay, m upon a cube. इसके लिए आपको मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है उन्होंने क्वेश्चन में. ओके, और बोल दिया कि एफसीसी लैटिस है, एफसीसी लैटिस दे दिया है, आपको यहाँ से लैटिस कांस्टेंट मिल जाएगा. अब इसी लैटिस कांस्टेंट की वेवलेंथ को यूज कर रहा है वो सिंपल क्यूबिक के लिए. सो यू हैव टू अप्लाई 2d sin theta equals to n lambda. Okay, for X-ray for first order you can put n equal to 1. Now you lambda already know. Okay, d, for d they have given you plane. Okay, and lattice constant also they given you a. Lattice constant also they given you a. Okay, a, the lattice constant. So it's asking what is the Bragg angle. निकालो.
सर हम्म क्वेश्चन में मतलब ऐसे नैरो बीम एफसीसी पे इंसिडेंट हुआ है ऐसा क्वेश्चन है क्या? पे नैरो बीम दे रखा है और हाँ। वेवलेंथ ये है, एक एफसीसी क्रिस्टल पर एक्सटी क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओके। ओके और डेंसिटी दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। तो आपको पहले लैटिस कांस्टेंट निकालना है ए, फिर इसी लैटिस कांस्टेंट की वेवलेंथ यूज करना है सिंपल क्यूबिक के साथ में। सर ए की वैल्यू 0.6 से एंगस्ट्रॉम आ रही है। 6 एंगस्ट्रॉम आ रही है, 6 एंगस्ट्रॉम। strong. ए शुड कम 6 एंगस्ट्रॉम। और एंगल कितना कितना आएगा? Root 3/8. हम्म Root 3/8. एंगल कैसा है, पूरा एंगल निकालो ना। ए दे रखा है आपको लैटिस कांस्टेंट, एच के दे रखा है आपको 2 डी साइन थीटा, सर 60 डिग्री सर 5/3। 5/3 आ रहा है, सही है। एंगल जो आपका आ रहा है दैट इज कमिंग 5/3। जिसने नहीं किया है मुझे होमवर्क भेजेगा वो, ठीक है। 5/3. सर यहाँ डी हम वो प्लेन्स की यूज कर रहे हैं 111। हाँ 1 प्लेन्स का, ओके। लैटिस कांस्टेंट दे रखा है आपको, ओके। जस्ट गिव मी वन मोर क्वेश्चन। चलो ठीक है, अभी कल डिस्कस करेंगे, ओके। ये जिसने नहीं किया मुझे अभी होमवर्क भेजेगा अभी करके। आई एम स्टॉपिंग हियर, ओके। सर हाँ पूछिए। सर हमारा जो वो NaCl वाला स्ट्रक्चर है वो हम लोग को खुद से करना है। कराऊंगा मैं अभी, और तुम खुद से भी करो, ओके ओके। अभी दो दो बचे हुए हैं, एक तो डायमंड बचा हुआ है, ओके। डायमंड बचा हुआ है और एक NaCl बचा हुआ है। इसका भी APF निकाल के भेजो मुझे, होमवर्क है ये। और फिर मुझे अगर लगेगा कि तुम लोगों को नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा कराऊंगा। एटलीस्ट 4-5 बच्चे तो करके दिखाओ, सही जैसा ही तो है। दिस इज आल्सो होमवर्क। हाँ, एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज क्लास? तो आज हमने क्या किया, हेक्सागोनल का हमने एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकाला, दैट इज केम अराउंड 74, ओके। That's it. And then we have discussed this X-ray diffraction. Okay, so X-ray diffraction, whenever your X-ray's wavelength is equivalent to or order of your crystal plane distance, then that condition your X-ray diffraction will take place. Okay, that condition is represented by Bragg's law. And once you have the information of crystal structure, okay, then you can play with this formulas. सारे फॉर्मूलों में मतलब ये इन्फॉर्मेशन चाहिए आपका 2D sin theta n lambda है। Now you should know D, ओके। डिफरेंट सिस्टम के लिए डी क्या है, वेवलेंथ कैसे प्रोड्यूस करेंगे, या तो वेवलेंथ दे रखा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे। सो यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट वेवलेंथ डी। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर सारे, छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं बनते हैं, ओके। सो कैन आई स्टॉप हियर? यस ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।